Hello, good morning, students. So, welcome to ADCI mock paper test discussion. Uh, Today is 28th August 2026, and we are going to start our paper discussion. Question number one. First of all, we must read the question carefully. Consider all the real roots of the equation x raised to power 4 minus 10x square plus 9 equal to 0. What is the sum of the absolute values of the roots? This is our first question. So, first we need to find out the roots. So, for this, just try to solve it. See what questions they how we can solve it. Question number one. It is x to the power 4 minus 10x square plus 9 equal to 0. Taking x square as t, put x square equal to t, it becomes t square minus 10t plus 9 equal to 0. There will be two factors for 9 such that their sum should be 10. So we can write it like minus 9 and minus 1. Okay. So when you will equate it, its sign gets changed. Okay. So t value will be equal to plus 9 and t will be equal to plus 1. So we have t we have considered as x square. So when we will put the value of x square as 9, x square equal to 1, we will be getting x equal to plus minus 3, x equal to plus minus 1. Now they are asking us to sum of the absolute values of the roots. Absolute values means we have to only take the positive values. Means if there is negative roots, make it positive again, then add. Sum of the absolute values will be equal to absolute values of roots will be equal to 3 plus 3 plus 1 plus 1. So that is equal to 8. Can you see the option 8? Option A is your answer. Okay, with 8. Fine. Hope you have understood. Moving to question number 2. They have given some mod value in quadratic equation and inequality sign is also there. Then they are asking which of the following is correct. We need to verify. Okay. So question number 2. If we have suppose in place both the values are quadratic equation values are same, no, x square minus 3x plus 2. Taking it as a. Taking x square minus 3x plus 2 equal to some constant value a. So they have given like this, mod a is greater than a. What does it mean? This implies a is less than 0. Okay, always remember this. Therefore, if we are going to solve this question, we can write it like this, x square minus 3 plus 2, which is less than 0. Okay, what are the factors of this value? So when you will solve it, you will be getting minus 1 minus 2. So x minus 1 into x minus 2. Okay. Now, by we can say wavy curve method, if we put this value 1, 2, we can find here positive, negative, positive. They are asking for less than 0, so this will be our value. So we can say it should lie between 1 and 2, right? Which option can be the correct answer? Therefore, x belongs to 1 to 2. Like this I can write, or in other way if you want to represent, you can represent in this way also. Both is same. X lying between 1 and 2. So option C is the correct answer. Okay. Okay. Next, let f be a function such that f of x plus 3 times of f of 24 by x is equal to fx. Then we have to find f of 3 plus f of 8. See, in order to find f of 3 and f of 8, we must have the values of f of x first. So we will try to find out the value of f of x first. This is our first target. How we can do it? See, they have given the values as f of x plus 3 times of f of
24 by x equal to 4x. So put x equal to 3 first. When you put the value of 3, you are going to get f of 3 plus 3. F of 24 by 3 is 8 equal to 4 into 3, 12. Okay, fine. This you can take at first equation. Okay. Second value, if you put the value of x is equal to 8 in the above expression, x is equal to 8, what we are going to get? F of 8 plus 3 times of f of 3 is equal to 4 into 8, 32. This is my second equation. Now, we are having two equations in terms of f of 3 and f of 8. We can solve it. Or if you go, suppose add it, what you will be getting? Equation number 1 plus equation number 2. So we will be getting 4 times of f of 3 plus 4 times of f of 8. So 4 can be taken as common like this. That is equal to 12 plus 32 is 44. With this 4 we can cancel this 11. So we got f of 3 plus f of 8 equal to 11. Where is that 11? Option D we can take. Option D. Okay. Next. Question number 4. Let R be a relation on the open interval minus 1 to 1. Okay. Given R, xy such that mod of x plus y is less than 2. Then which one of the following is correct? Oh, we have to check whether the given relation is reflexive, equivalence, transitive. And how we can do it? For reflexive, we are going to replace that y value with x only. So just put that value. Question number 4. For reflexive, for reflexive, replace x with y with x, sorry. Replace y with x. So what we are going to get? Mod of x plus x less than 2 means mod of 2x is less than 2. 2 and 2, if you cancel it out, 2 we can take outside, no? Mod value. 2 and 2 will get cancelled out, 1 will be there. So they are saying that mod x is less than 1. Okay. And they are defining this value between minus 1 to 1. Interval should be minus 1. Mod x is less than 1. It means we can say that x value is going to be lying between minus 1 to 1. That is fine now. So first option is correct. Sorry, not first option. It is reflexive. It is reflexive. Then we will check for symmetry. What is the method to check symmetry? Symmetry. If they have given the condition mod of x plus y less than 2, we will interchange y with x. So it will become what? This implies mod of y plus x less than 2. Is it true? Which means if xy belongs to real relation R, then this must imply that yx should also belong to relation R. So it is a true, therefore symmetric also. Therefore symmetric also. Then third, for transitive, what we will do for checking transitive? For transitive, we need to have some numbers, put some points and check, because directly we cannot check. Or suppose for transitive, if they have given mod of x plus y less than 2, this is the condition, and also y plus z is less than 2. This is second condition. Now, combining both of these two conditions, what it is going to give us? I want the relation in terms of x and z. If x plus z is also less than 2, then it is fine. So, if we will add both of these, so it becomes x plus 2y plus z, or like this, suppose mod of x plus y plus mod of y plus z is less than 2 plus 2, 4, like this we are getting. Okay. So, how we are going to get the values for this?
in terms of x and z. Is it possible? X plus z. We need to have some values, otherwise it is very difficult to check. Between -1 to 1 only we have to take the value. Suppose I am taking x is equal to 0.8, y I am taking 0.1, and z I am taking 0.8. Just check whether it is satisfying or not. Mod of x plus y means 0.8 plus 0.1. So it will be equal to 0.9, which is less than 2. Fine. Again, I am taking 0.1 plus 0.8. So if I will add it again, I will be getting 0.9, which is also less than 2. Then 0.8 plus 0.8. It will be equal to 1.6, which is also less than 2. Fine. So I think it will satisfy. It is not a big deal. We know this property, no, mod of x plus y is less than or equal to mod x plus mod y. ये भी होता है. दो mod है. So which can be written as less than 1 plus 1, which is less than 2. Okay. Hence the condition holds for every pair. Therefore it is transitive also. Therefore we can say that it is a it is an equivalence relation. Okay. It is equivalence relation. Okay. So option B will be our correct answer. Option B. Okay. Next, how many real numbers satisfy the equation? Good. Try this question, all of you. It is a very good mod question. Mod of x minus 7 is equal to 15. How many real numbers satisfy this equation there? See, we are going to do through this number line. First I will write 4, then I will write 7. Here it will be x minus 7 with positive sign, x minus 4 with positive sign, x minus 7 with negative, x minus 4 with positive. Here it will be x minus 7 with negative, and x minus 4 left side it will be negative. So we have three cases. Case 1, when x is less than 4, we are going to get minus x plus 7, then minus x plus 4 equal to 15. Is it true? Minus x minus 2x, and 7 plus 4 is 11 equal to 15. So minus 2x equal to 4, x is equal to minus 2. Less than 4 minus 2, yes, it is one of the solution. Next, case 2. 4 say greater and less than 7. This is our second case. We will put the value x minus 4, okay, minus x plus 7 plus x minus 4 equal to 15. Is it satisfying? X got cancelled, 7 minus 4. 3 cannot be equal to 15, no? So no solution. No solution here. Case 3. X is greater than 7. X minus 7 plus x minus x minus 11 equal to 15. 2x equal to 26. X equal to 13. So yes, it is a solution greater than 7. So we have two solutions. Two real solutions. Which is the option? Only two. Option number B. Option B, only two solutions. Only two solutions. Okay, next. Domain of the definition of this function f of x. Oh, we need to find domain. Domain, since root is also there, log is also there. So we need to apply the properties of these functions, root function and log function. 5x minus x square by 4. Okay.
First, we will go for root. So root value always gives us positive output. 5x minus x square by 4 greater than or equal to 0 I can write. Then after solving it, I am going to get 1. Then it will become 5x minus x square greater than equal to 4. X square minus 5x plus 4 less than equal to 0. Now I will be finding the two factors for it. So it will be x minus 4 into x minus 1. Okay. It is less than equal to 0. When you will equate it, we need to find the domain value. When we go for number line, it is 1, it is 4, positive, negative, positive. I want negative, so this is the output. Second part, log value always should be greater than 0. Second part, this is my first part. 5x minus x square by 4 must be greater than 0 because log is defined for only positive numbers. So 5x minus x square greater than 0. When you will change the sign, or if you take x common here, you are going to get 5 minus x greater than 0. Put a number line here. You will be getting 0 and 5. Then you have to put minus plus minus positive numbers. Okay, here it is. This value we are getting 0 to 5. Combining both the roots, therefore common root, common domain value. Common domain value will be equal to, we'll put a single number line. All the numbers will put here 0, 1, 4, 5. It is saying 1 to 4. It is saying 0 to 5. Here it is dark circle, closed, this is also closed, this is open, open. So our final output will be 1 to 4 only with closed bracket. Therefore, x belongs to 1 to 4 with closed bracket. Which option is it? Option D. Question number 7. 1 plus omega raised to power 7 is equal to a plus b. They are asking us to value the a plus b. So we know by the properties of cube root of unity, 1 plus omega is equal to minus omega squares. Minus omega square raised to power 7 is equal to minus omega raised to power 14, that is equal to minus omega square, and okay, minus omega square. Minus omega square can be again written as 1 plus omega only. 1 plus omega equal to 1 plus b omega. So by comparing, a equal to 1 and b is also equal to 1. So 1 comma 1 is the answer. Option E. Option A is your answer. 1 comma 1. If the center and radius of the circle are respectively alpha and beta, alpha, beta, and gamma, then 3 times of alpha plus beta is equal to what? For that, you need to solve it. Just we know that z is written as x plus iota y. If you put this value in this above question, what we are going to get? It is mod of z minus 2 upon mod of z minus 3 equal to 2, right? So when you do the cross multiply, I can write it like this, 2 into mod of z minus 3. So putting the value, squaring, first you take the squaring of both sides. So you are going to get, if you put the value of x plus iota y in place of z, x plus iota y minus 2 whole mod equal to 2 mod of x plus iota y minus 3 whole mod. Taking the real parts together, x minus 2 plus iota y like this equal to 2 into x minus 3 plus iota y. Now, since it is mod value, how to calculate the mod value for a complex number? Take real part ka square plus imaginary part ka square. 2 ka square I will take 4.
Then in bracket I will be writing x minus 3 ka whole square plus y square. I'm not writing root because root I've cancelled from both the sides, and also I've taken the square of 2s4, so it is fine. Now expanding these values, a square minus 2 into 2 4x plus 2 square 4 plus y square equal to 4x square minus 6 into 4 24x, 9 into 4 36 plus 4y square. Okay, taking all the terms together one side, it becomes 3x square plus 3y square. Then minus 24x, this will go to, it will become minus 20x, and then 36 minus 4 is plus 32 equal to 0, like this. Now taking 3 common from here, it will be x square plus y square minus 20 by 3x plus 32 by 3 equal to 0. So we need to find the center and radius for this circle's equation. So we know center is equal to minus g comma minus f. Center is minus g comma minus f, that is equal to g will be getting 2g is equal to minus 20 by 3. So g is equal to 10 by 3. And there is no y term, so it will be 0. And radius formula is under root g square plus f square minus c. So g square will be equal to 100 upon 9 c minus 32 by 3, like this. 100 minus 0.9. So we are going to get here 4 by 9, that is 2 by 3. We got the radius also as 2 by 3. Therefore, r equal to 2 by 3. Now, what is the question? What they are asking? 3 times of alpha plus beta plus gamma. That is equal to 3 times of alpha is 10 by 3, beta is 0, and gamma is 2 by 3. Right. So 3 we can take common and will get cancelled out. So 10 plus 2 equal to 12 will be our answer. Where is 12? Option number C. Okay. So option C is the answer. Okay. Next. Question number 9. Cube roots of unity. Again they have given, and they are asking you to find out the values for x minus 1 whole cube plus 8 equal to 0. Right. So I can write it in this way. X minus 1 whole cube equal to minus 8. So x minus 1 can be written as cube root of minus 8. Then x can be written as 1 plus cube root of minus 8. That is equal to 1 plus cube root of minus 8 means minus 2 ka cube. The cube root of this value 1 plus. So when you will cancel it, you will be getting 3 roots from here, because cube root is going to give you 3 roots. Directly we cannot take this value. We need to be careful. Cube root means there will be, you have to be getting 3 roots here. That is important. So we Hello, can, sir. yes, hello. Yes, sir. Is this 11 th standard lecture? No, this is paper solving, NDA paper solving. Yes. Okay, you can contact to management for your lecture. Okay, so minus 8 can be written as minus 2 raised to power 3, like this. So x minus 1 raised to power 3, then I will do it like this: x minus 1 upon minus 2 whole raised to power 3 equal to 1.
So it is like this, x minus 1 upon minus 2 equal to cube root of unity. So we know that cube root of unity has three roots, 1 omega omega square, like this. So simple. Now do the cross multiplication, try to free x value. Therefore, I will be getting x is equal to minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1. One value will be this. Minus 2 omega plus 1 minus 2 omega square plus 1. So I'm going to get minus 1, then 1 minus 2 omega, then 1 minus 2 square. So which option we can take here? Option number C. Option C is the correct answer. Okay, moving to question number 10. See here. If mod of z minus 4 by z is equal to 2, then what is the maximum value of mod z equal to? Okay. See, given condition is mod of z minus 4 upon z whole mod equal to 2. Right. So we have some triangle inequality. We are going to use it by triangle inequality. Inequality. We have mod z is equal to mod of z minus 4 by z bracket. We can add and subtract this 4 by z to it, to this z value, which is less than or equal to mod of z minus 4 by z plus 4 by mod z, like this. Okay, which can be written as mod z whole square minus 2 into mod z minus 4, which is less than or equal to 0. Can we write it in this form? This implies mod z is less than or equal to, I will write like this, by quadratic formula. If we want to find out the roots for this equation, how we can write it? It is b plus minus root under, don't take minus part, only plus part, under root b square, that is 4 plus b square plus 4ac, that is 16, divided by 2a, that is 2. If you solve it, you will be getting 2 plus root 20 by 2. And root 20 can be written as 2 plus 2 root 5 by 2. You can take 2 common, I will be getting 1 plus root 5, like this. 1 plus root 5 is there in your option? Yes, option D. Option D, you can take it from it. Okay. Okay, come on, students. Let's move to next question. This is option number D. Fine. What is question number 11? Just see. Let u I equal to 1 to 50, xi equal to ui equal to n, yi equal to t, where each xi contains 10 elements, each y contains 5 elements. If each element of t belongs to exactly 20 of sets xi exactly 6 yi, n will be equal to what? Okay, sorry. Question number 11. Okay, first of all, we need to find out how many elements set X is having. ठीक है? So xi will be having 1 से लेके 50 तक उन्होंने बता रखा है, और हर xi के पास 10 एलिमेंट्स है. इसका मतलब 50 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 500 एलिमेंट्स तो xi के पास हो गया. yi के पास, अच्छा yi का तो n के टर्म्स में है ना, इक्वल टू टी बता रखा है. उन्होंने बोला ईच एलिमेंट ऑफ टी इज इन 20 सेट्स ऑफ xi, है ना, बोला है ना 20 सेट्स ऑफ xi का ईच एलिमेंट x टी के पास है. तो इसका मतलब अगर मैं 20 से 500 को डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा? टी के पास
कितना निकल के आ रहा है, उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसके पास, उसमें से 20 एक्साई से ही निकल के आ रहा था। 20 से इसको डिवाइड करने पे कितना आ गया, 25। और वाई आई के पास टोटल एलिमेंट कितना है, वाई आई हैज टोटल 5 इंटू एन, 5n एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से भी टी के पास कितना कॉमन बता रखा है, एग्जैक्टली 6 ऑफ द सेट्स ऑफ वाई आई, तो इसको भी 6 से डिवाइड करो। देयरफॉर टी के पास मिलके आएगा 5n/6। अब दोनों को बोला इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो ये दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लो आप, हो जाएगा। देयरफॉर एज पर क्वेश्चन उन्होंने दोनों को इक्वल बता रखा है, तो 5n/6 इक्वल टू 25 हम कर सकते हैं। 5 से 25 5 बार में कट हो गया, तो n इक्वल टू 5 इंटू 6 30। 30 ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। If x is equal to 4 raised to power n minus 3n minus 1 n belongs to natural number, y equal to 9 of n minus 1 n belongs where n is the set of natural number, then x union y will be equal to what? You have to tell the union value. Question number 12. Write it. X is equal to 4 raised to power n minus 3n minus 1, इस तरह से दे रखा है। और क्या बता रखा है इसके बारे में, कितने एलिमेंट्स इसके पास हो सकते हैं, तो कुछ वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा। पुट n इज इक्वल टू 1, क्या आ रहा है देखो, 4 माइनस 3 माइनस 1, मतलब ये हो गया 0। अगर n का वैल्यू हमने 2 पुट किया तो 16 माइनस 6 माइनस 1, ये कितना आ रहा है 9। n इक्वल टू 3 पुट किया तो 4 का 3 64 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 1, ये कितना आ रहा है 54। तो ऐसे आ रहा है 9 के मल्टीपल्स में तो नहीं बोल सकते, और 9 के मल्टीपल्स में, 9 के टेबल में तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आया। अभी दूसरा वैल्यू क्या है, y के बारे में बताया है 9 इन ब्रैकेट n माइनस 1, ऐसा कुछ है। तो इसमें अगर मैंने n का वैल्यू 1 पुट किया तो ये कितना बन रहा है बोलो, 1 माइनस 1 0, 0 हो गया पहला वैल्यू। n का वैल्यू 1 के बाद 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। n का वैल्यू 3 पुट किया तो 18। अच्छा, तो दोनों में कॉमन रीजन पूछा, कॉमन किसके पास है, ज्यादा ज्यादा एलिमेंट्स किसके पास है, ऑब्वियसली ज्यादा एलिमेंट y के पास है और x के पास कम है, तो x जो है ना एक सबसेट के तौर पे होगा ना y का, सबसेट, x इज अ सबसेट ऑफ y, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। इक्वल भी है सारे एलिमेंट्स, तो इसका मतलब जब मुझे x यूनियन y पूछा जाएगा, दोनों को मिला करके क्या आएगा, तो जो बड़ा वैल्यू रहता है वही आता है ना, तो y आ जाएगा। ऑप्शन ए पे टिक करो, होगा। क्या पूछा है, let a equal to x belongs to R is such that mod of x plus 1 is less than 2, b is x belongs to R, a mod of x minus greater than equal to 2, then which one of the following is not true? Okay, पहले वैल्यूज निकालो इसका, पहले वाले का। क्वेश्चन नंबर 13, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये एक ही बात चल रही है, ए इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज लेस देन 2, इसका क्या मतलब हुआ,
अगर तुम नंबर लाइन पे जाओगे, यहाँ पे -1 रखा, इधर में जो है x+1 पॉजिटिव और इधर में -(x+1) आएगा, ठीक है। <2 चाहिए, 2 किधर रहेगा, कहीं ना कहीं इधर है, 2 से लेस की बात कर रहा है। तो इसमें हमारा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा ना पहले तो। उसके बाद <2। अगर मान लो x को <2 मैंने दो केस बनाया, एक ये केस एक ये केस, -3 to 1 के बीच में आ रहा है, ऐसा बोला था। मॉड को खत्म करेंगे तो ऐसे लिख सकते क्या हम, x+1 <2 इज ग्रेटर देन -2, ऐसा लिखेंगे। क्या बोला, रियल नंबर्स के बारे में बात किया है। which of the following is not true? Okay, चलो following रियल नंबर्स की बात कर रहा हो तो यहाँ से आ जाएगा -1 से ग्रेटर एंड लेस देन, सॉरी -3 और यहाँ पे 1, तो x का वैल्यू -3 से 1 आ गया है, ठीक है। x बिलोंग्स टू -3 to 1। चलिए, ये तो पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट b के बारे में क्या बताया हम लोगों ने, b इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा बोला है। उसको भी सॉल्व करते हैं, 2 से ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर या फिर लेस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसके दो केस बनेंगे, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x-1 लेस देन इक्वल टू -2। तो यहाँ से हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ से हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो दोनों को मिला दिया तो therefore x belongs to -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे हम इधर, ऐसा, ठीक है। फिर क्या पूछा अपने को फाइनली इसमें, चार ऑप्शन दिए हैं, -b, b-a, a यूनियन b, इंटरसेक्शन b। कौन सा उसमें से सेटिस्फाई कर रहा है वो अपने को बताना है। पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। अगर मैंने b में से a को माइनस किया तो क्या आ रहा है बोलो, b में से a वाले रीजन को निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और b दोनों को पहले एक सिंगल नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्या क्या वैल्यूज है, -3 है, -1 है, 1 है और 3 है। इसने बोला कि -1 से छोटा और 3 से बड़ा, ये इसका सोल्यूशन है बी का, ये बी हो गया। और ए का क्या कहना है कि वो कह रहा है कि -3 से 1 के बीच में है उसका वैल्यू, ये रहा -3 से 1 के बीच में ए का ओपन ब्रैकेट रहेगा, लेकिन इसका जो है क्लोज्ड ब्रैकेट है। ओके, बी में से अगर मैं ए को निकाल देता तो मुझे क्या मिलेगा, b-a, जैसा पहला ऑप्शन मुझे बोल रहा है। ए वाला रीजन मतलब -3 से 1 निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -∞ से लेके -3 तक क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं उसका पार्ट, निकाल तो रहा हूँ मैं, तो जो उसका पार्ट रहेगा वही सब निकलेगा ना, ये रहेगा। और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा, ये भी क्लोज्ड ब्रैकेट। उन्होंने कैसे लिखा है, r माइनस, विच कैन बी रिटन एज, और r माइनस -3 to 1 लिखा है, ये कैसे हो सकता है। बी के अंदर -∞ to -1 और 3 to ∞ था, तो ये, और इसका वैल्यू -3 to 1 था,
तो जब ये वैल्यू आप निकालोगे बी में से, तो बी के पास -3 तक और 3 से आगे तक का रहेगा ना, और -(-3 to 1), -3 से 1 अगर आप निकालोगे तो क्या, तो 1 से 3 भी तो उसमें कवर हो गया। 1 से 3 कैसे कवर होगा फिर? ये शायद गलत ऑप्शन लग रहा है अपना, ये है ना, r माइनस यूनियन 3 to infinity, हाँ, which can be written as -3 to 1। अगर मैं निकाल देता हूँ, -3 से 1 के बीच में अगर मैं निकाल देता हूँ, तो ये -b -1 to 1, वो तो सही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन भी देख सकते हैं, यूनियन भी देख सकते हैं। ए यूनियन भी अगर मैं लिखूंगा दोनों को मिला करके, तो दोनों को मिला दिया जाए तो r-1 से 3 को निकालना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर है हमारा। बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी दिख रहा है, यूनियन, दोनों को मिला के लिखना है ना। इनका बस 1 से 3 को निकालो, बाकी सब आंसर है। तो ये जो वैल्यू है -3 से लेकर के 3 तक का, ये ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है ना अपना, माइनस करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू r माइनस, ए यूनियन बी अगर मैं दोनों मिला देता हूँ तो कितना आसान से होगा, इन्फिनिटी से लेकर के तुम्हें 1 तक मिल जाएगा, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 पे क्लोज ब्रैकेट। इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखना है कि ऑल रियल में से क्या माइनस करना है अपने को, 1 माइनस करो और 3 माइनस कर दो, तो ये ऑप्शन अपना मैच हो जाएगा किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके बच्चों, चलो लिखते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है, लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 183। तो n का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, बाइनोमियल का एक्सपेंशन सबको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर, ये फॉर्मूला होता है अपना। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया है 7 to the power 1/3 है, प्लस 11 to the power 1/12 है, n है। इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखता हूँ तो tr+1 कैन बी रिटन एज NCR 7 to the power 1/3 n minus r 11 to the power 1/12 r। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या लिख सकते हैं हम इसको, NCR 7 to the power n minus r to the power 3 into 11 to the power r/12। उन्होंने इंटीग्रल टर्म्स यूज किया ना, इंटीजर्स ही आने चाहिए। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बाइनोमियल सिस्टम इज 183। अब देख रहे हो यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, इसको इंटीजर होने के लिए 12 का मल्टीपल होना पड़ेगा ना। फॉर इंटीग्रल टर्म्स, फॉर इंटीग्रल टर्म्स r must be a multiple of 12, मल्टीपल ऑफ 12। ओके, तो r का वैल्यू हमने ले लिया, r का वैल्यू जैसे 0 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं, ऐसे चलता रहेगा। इससे पता चल रहा है कि 12 का मल्टीपल ले रहे हैं ना हम, तो 12 ये ले सकते हैं। ठीक है, और एंड इसके साथ साथ n माइनस r जो है वो मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3।
must be a multiple of 3 which holds okay. तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे फाइंड करना है k+1 इक्वल टू 183, वो जो 183 का वैल्यू उन्होंने गिवन है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन बिजनेस बनने में, वही द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, कितने टर्म्स इंटीग्रल टर्म्स है उनका। अच्छा, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ना हमेशा k+1 से रिप्रेजेंट होता है ना, एक ज्यादा आता है, तो k का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू k+1 अगर हम ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू 183 बोल रहा है, तो यहाँ से k का वैल्यू हमें मिल जाएगा 182। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे k+1 टोटल k का वैल्यू अगर 182 आ गया, n का वैल्यू अगर मैं n का वैल्यू तो मुझे फाइंड करना, r का वैल्यू 182 रख के करता हूँ तो क्या निकल के आएगा देखते हैं। n c r मतलब 182 अगर मैं रखता हूँ तो मुझे r+1 का वैल्यू तो चाहिए ना, फिर इक्वेट करने के लिए मैं किसको इक्वेट करूँगा। 'लिस्ट वैल्यू ऑफ n जो मुझे निकालना है वो n कहाँ से निकल के आ सकता है, इसमें मैं कहाँ पुट करने से काम मेरा हो जाएगा। NC 182 अगर r का वैल्यू मैंने 182 के प्लस को रख के सॉल्व किया, हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए था, तो हमें इनका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, लिस्ट वैल्यू 183, k का वैल्यू हमारा 182 है, यहाँ तक तो ठीक है। नाउ देयरफॉर n का जो वैल्यू होगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज रिटन एज 12 का मल्टीपल चाहिए ना, 12 इंटू 182, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, इट विल बी इक्वल टू 2184। तो बस फिर यही आंसर है, 2184, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। ओके, नेक्स्ट, which of one of the following is correct with respect to f of x and g of x। चलो इसको करो, कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 15, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, 1/√mod ऑफ x - यही है, तो इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, mod x - x मस्ट बी ग्रेटर देन 0,
दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स, और इसका क्या मतलब होता है, एक्स इज लेस देन जीरो, मस्ट बी लेस देन जीरो। इसका डोमेन क्या निकल के आ गया, देयरफॉर डोमेन इज सच दैट x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ओके, सेकेंड फंक्शन क्या दिया है, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स। इसको भी सॉल्व करो। x minus mod x must be greater than 0. This implies that mod x is less than x, जिसका क्या मतलब हुआ, mod x लेस देन x, क्या ये पॉसिबल है, लेस देन एक्स कभी हो सकता है क्या, नहीं ना। नो सॉल्यूशन है, नो रियल सॉल्यूशन। तो उसके ऑप्शन में क्या दिया है, if x has some domain and gx has no domain, ऑप्शन सी टिक करो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, ऑप्शन सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वन का वैल्यू गिवन है, तुम्हें ये सारे वैल्यूज पूछा है, बताओ क्या होगा, करो। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। ओके, अगर हमने यहाँ पे वाई का वैल्यू जीरो पुट किया तो क्या मिलने वाला है मेरे को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, वन का वैल्यू दिया है, कोई बात नहीं, एफ ऑफ एक्स ये ऊपर ऊपर कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिला, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन मिला यहाँ से। चलो इसको रहने दो, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू एक वन आ गया अपने पास। अगेन फॉर फॉर वाई इक्वल टू माइनस वन, वाई का वैल्यू अगर हमने माइनस वन रख दिया तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस वन, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस वन, ऐसा हुआ। दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई का वैल्यू और क्या रख सकते हैं, जीरो रख दिया। वाई के बाद में वैल्यू तो हमें एक्स तो निकालना है ना, वाई को खत्म करना है, वन का वैल्यू दिया हुआ, वन पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई टू, एफ ऑफ माइनस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू टू, दैट इज टू इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इससे क्या पता चल रहा है, एफ ऑफ एक्स, therefore f of x is equal to f of x plus 1 upon 2, ऐसा कुछ। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो निकालना है ना पहले से, लेकिन मुझे यहाँ पे तभी तो आगे का काम हो सकता है, वन का वैल्यू दिया हुआ था, वन का वैल्यू यूज करने के लिए अगर एक्स का वैल्यू हमने जीरो पुट किया सपोज वहाँ पे, वाई को जीरो पुट करके तो कर लिया हमने, अगर एक्स को जीरो पुट किया होता था तो वन का वैल्यू है ना, तो वन हमें चाहिए वहाँ पे।
एफ ऑफ एक्स वन करने के लिए यहाँ पे हम तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन अगर टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है ना। एक्स ये जो वैल्यू आया अभी क्या करो, एक्स का वैल्यू हमने सपोज जीरो पुट किया तो एफ ऑफ वन बाई टू आ रहा है ना, एफ ऑफ जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, एफ नहीं एफ ऑफ जीरो मत रखो, एक्स इक्वल टू वन रखो, वन रखेंगे तो क्या बनेगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू वन एफ ऑफ टू बाई टू इज इक्वल टू, ऐसे लिखो ना, एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू बाई टू, ऐसा हो गया। तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ वन का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है ना 0.5, 0.5 इंटू टू इक्वल टू एफ ऑफ टू दैट इज इक्वल टू वन, वन एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू का वैल्यू वन हो गया। वैसे ही एक्स का वैल्यू अभी वन पुट किया था, अब टू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू टू पुट किया तो क्या बनेगा, टू थ्री फोर, स्क्वायर में 0.5 फोर, वन बाई टू, इससे नहीं होगा, वी कैन टेक दिस लाइक दिस, ओके। देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने को इस फॉर्म का फंक्शन देगा, वन बाई टू, वन बाई टू रेज टू पावर एक्स। अगर ये मेरा फंक्शन हो रहा है तो मैं इसको ऐसे अभी सॉल्व करूंगा, एफ ऑफ सम हमें चाहिए ना, टोटल क्वेश्चन में क्या वैल्यू पूछा है, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ फाइव प्लस एफ ऑफ सिक्स, ऐसा है। ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, रेज टू पावर टू, वन बाई टू रेज टू पावर थ्री, वन बाई टू रेज टू पावर फोर, वन बाई टू रेज टू पावर फाइव, वन बाई टू रेज टू पावर सिक्स, वन बाई फोर, वन बाई एट, वन बाई सिक्सटीन, वन बाई थर्टी टू, वन बाई सिक्सटी फोर। अगर मैंने डिनोमिनेटर 64 लिया तो यहाँ से 16, 8, 4, 2, 1, 10 20 30 31/64, देखो है ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी टिक करो। I'm taking 2 minutes break, students.
ओके, welcome again, students. I'm moving to question number 17 now. What is there in a class of 240 students? 180 passed in English, 130 in Hindi, 150 in Sanskrit. Of the 60 passed in only one subject, 110 passed in only two subjects, and 10 passed in none. How many passed in all the three subjects? Okay. क्वेश्चन नंबर 17। चलो करते हैं बच्चों, क्या है इसमें देखो। टोटल कितने बच्चे हैं अपने पास? 240। ओके। और नन, एक भी बच्चे पास नहीं हो पाए, वो कितने हैं? 10। और 180 पास इन इंग्लिश, 130 इन हिंदी, 150 इन संस्कृत। ओके, तो टोटल 240 है पास, एक भी 10 लोग फेल हो गए, किसमें भी पास नहीं हो पाए। तो कितने टोटल पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल पास्ट स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 240 माइनस 10, दैट इज 230 बच्चे पास हुए, ठीक है। उसके बाद 60, 110। ओके, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस संस्कृत। 180 इंग्लिश का दे रखा है, 130 हिंदी का दे रखा है, और 150 संस्कृत का दे रखा है। ऐड करने पे कितना होगा ये? 8 3 11 5 16, एक 460 स्टूडेंट, ठीक है। आपने को पूछा है हाउ मेनी पास इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, कितने यूनियन मतलब पूछा आपने। पास्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? उन्होंने बोला है कि 60 पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, 110 पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट्स, 10 पास्ड इन नन ऑफ 110 पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट्स। टू सब्जेक्ट्स, दो दो सब्जेक्ट वाले दे रखे हैं, ओनली वन सब्जेक्ट पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। मतलब कि अगर मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ इसका, देखो आप, ये और ये, सॉरी मुझे जरा लार्जर डायग्राम बनाना चाहिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक वेन डायग्राम है इस तरीके का, ये है, ये है और ये, ठीक है। इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और इसको एस मानना, ठीक है। तो हमारे पास जो है पास्ट 60 पास्ट इन ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब उन्होंने दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60, ये है उसका मतलब। फिर 110 पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट्स, मतलब P प्लस Q प्लस R बच्चे ऐसे हैं जो पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट्स, दैट इज 110। और हमसे S पूछा गया है तीनों सब्जेक्ट्स, मानी S का वैल्यू बताना है। ओके, तो टोटल का यूनियन जो पास हुए हैं वो हमारे पास कितना, ऊपर हमने निकाला था 230 बच्चे पास हुए हैं। तो देयर फोर एस विल बी इक्वल टू, टोटल जो पास हुए हैं 230, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 60 और प्लस 110 को, आई थिंक इसी से आ जाना चाहिए। 230 माइनस 117, सॉरी 170, तो दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 60। ऑप्शन बी टिक करो बच्चों, हो गया ऑप्शन बी। बाकी के जो वैल्यू जो 180 130 और 150 दे रखे हैं उनका कुछ यूज है नहीं।
पास्ट इन इंग्लिश मेथड तो पूरा दे रखा है उन लोगों ने, ये दिया ही नहीं है, ये टोटल दिया है एक साथ, तो कैसे करोगे, सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये तरीका सही है अपना, हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, व्हाट इज समेशन ऑफ r इक्वल 0 टू r सी एन आई। ओके, दे हैव गिवन समेशन r इक्वल टू 0 से लेके n टू रेस टू पावर r सी n r। ओके, मतलब r का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 0 और कॉम्बिनेशन ऑफ n पावर मतलब n c 0 प्लस 2 रेस टू पावर 1 n c 1 प्लस, ओके, 2 रेस टू पावर 2 एन सी 2 प्लस डॉट 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 एन तक का समेशन आपको बताना है। 2 रेस टू पावर एन, फिर एन सी एन तक जाना, राइट। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? तो कर सकते हैं कोई भी दो वैल्यू जिसमें से कंसीडर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो, और ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो वी आर गेटिंग 1, यहाँ से भी 1 1 प्लस 12। ये वैल्यू देखो कौन सा दे रहा है आपको, इसमें से मिलेगा 1 प्लस 2। एन का वैल्यू हमने क्या पुट किया, दो वैल्यूज लिया मतलब 1 तक गए हैं ना। आर का वैल्यू सिर्फ वेरी करेगा एन में। वन टू, अगर मान लो एक और वैल्यू लिया तो कितना आ जाएगा, 4 एन सी टू का वैल्यू कितना होगा, एन इंटू एन माइनस 1/2, ऐसे हो जाएगा, तीन टर्म्स का अगर लिया तो ऐसा। और ऑप्शन में मैं दे रखा है 3n 2n 2n 3n, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। अच्छा, अब अलग से आपको n का वैल्यू पुट करके मैच करना पड़ेगा। n का वैल्यू सपोज आपने, n का वैल्यू सपोज आपने 1 रख दिया, तो 1 प्लस 2 3, 3। ओके, अब यहाँ पे क्या करो आप, n का वैल्यू सपोज आपने रख दिया 1, देखो तो क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 जीरो, ये तो सबको जीरो कर देगा। तो 1 प्लस 2 3 ही आ रहा है, इनका वैल्यू 1 रखो, 1 रखा तो 3 3, तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है ना फिर तो, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 18। यस, देयरफॉर option A is your correct answer. Okay, you can see in option A, if you put the value of n equal to 1, you are going to get 3 in option A. Other values they are not going to give you 3. So there is only one option correct, which is option A. Right. Moving to question number 19 now. If P times the P term of an P equal to Q times the Q term, then what is the P plus Q term equal to? Okay. This is just a satta, students. No need of wasting time in this. Whenever there is a reciprocal relation between the term and the value of the AP, then it, and then sum of both those, sum of both of those values, that is P plus Q term, it is always equal to 0. So it is option D. This is a satta. Remember it. 20. What is the minimum value of the function? This. What minimum value can be there for this? They are asking. Okay. Minimum value can be what? X square plus 2x plus 1. Log is defined for only positive numbers. Okay. So when you will try to solve it, its minimum value can be what? They have, according to the property of log, question number 20, x square plus 2x plus 11 must be greater than 1. Okay, greater than 0. So I can write it like making a perfect square, x square plus 2 into 1 into x plus 1 square minus 1 square plus 11 greater than 0. It can be written as x plus 1 whole square
plus 10 greater than 0. So whole square is greater than minimum value is 0. Here if I square value always gives us minimum value of 0. 0 plus 1 minimum value. I think I am getting 10. So minimum value of fx whole function they are saying. If this function its minimum value is here minimum value of the above function is 10. Since square value always gives us minimum value of 0. 0 plus 10 is 10. So therefore, our the f of x value is there. So we can write it like this: log 10 to the base 10. So this value equal to 1. So this is the minimum value. Where is the option 1? Option C having 1. Okay. Therefore, option C you can take as the correct answer. Then let the range of the function be a to b. If alpha and beta respectively, that's meaning geometric mean of a and b. Okay. Then alpha by beta is equal to what? Okay. First we need to find out the range for this value. Sin 3x plus cos 3x. Okay. Output. What output we can get? Question number 21 is 1 upon, so we need to solve it first. 2 plus 2 plus sin 3x plus cos 3x. If you try to solve it, uh, 1 by root 2. Root 2 you can take outside, 1 by root 2 can be taken inside, it becomes sin 3x, again it will be 1 by root 2, cos 3x, then 2 plus root 2, it can be written as sin a cos b. That means sin of 3x plus 5 by 4 of its close. So 2 plus root 2 sin of 3x plus. Okay. What is the maximum and minimum value for this? That is equal to 2 minus root 2 and 2 plus root 2. Correct or not? 2 minus root 2 and 2 plus root 2 are the maximum and minimum value for this function. Therefore, for f of x is equal to 1 upon 2 plus sin 3x plus cos 3x, range will be equal to 1 upon 2 minus root 2 and 1 upon 2 plus root 2. Okay, those brackets should be there. These are the values for range. Now we have to find the arithmetic mean for it. Arithmetic mean will be equal to adding both of these values 1 upon 2 minus root 2 plus root 2 divided by 2. Which we are going to get. That is 4 by 4 minus 2 into 2. So 2, 4 minus 2, 2 by 2, that is 1. Then geometric mean under root a into b, that means 1 minus 1 upon 2 minus root 2, 1 upon 2 plus root 2, that is equal to 1 upon under root
understood, that is 1 upon root 2. So they are asking about alpha by beta. This they are saying that take it as alpha and this one as beta. This is alpha, this is beta. Alpha by beta is 1 by 1 by 2 root 2. Where is the option root 2? Option 3 is the correct answer. Okay, students, moving to question number 22. Let T R be the odd term of an AP with first term A and common difference D. If for some positive integers M and T M is 1 by T, then A minus D will be 2 volts. Okay, they have given Tm. Tm is equal to A plus M minus 1 into D equal to 1 by N. Yeah. And they are saying that Tnth term equal to A plus N minus 1 into D equal to 1 by N, like this. After solving it, taking it as equation number 1, equation number 2, 1 minus 2. When you subtract it, A and A will get cancelled out. You will be getting M minus N into D equal to 1 by N minus 1 by N. So it can be written as D equal to 1 by minus 1 by M and value. This is my D value. No, it's plus only. Plus 1 by M and only. Okay. So putting this value, put D value in equation number 1. We get A also equal to 1 by M. So they are asking us about A minus D. Since both are same, we'll be getting 0. So option B you can take. Moving to question number 23. The equation of the plane passing through the intersection of the planes based on this and upon this will be what? Okay. Whenever there is a intersection of two planes, we can write up the common plane or the equation of plane passing through the intersection of the two planes as therefore required plane implies 2x plus y plus 2z minus 9 plus lambda times 4x minus 5y minus 4z minus 1 equal to 0. Okay. They have given that it is passing through some point. Passing through, it passes through 3 to 1. Put this value in the above equation. You will be getting 6 plus 2 plus 2 minus 9 plus lambda times of 12 minus 10 minus 4 minus 1 equal to 0. Add to plus minus now. It is 1 plus lambda minus 15 minus 3 equal to 0. So lambda equal to 1 by 3. Okay. Now you can put this value of lambda again in the equation. Therefore, equation becomes 2x plus y plus 2z minus 9 plus 1 by 3 in bracket 4x minus y minus 4z minus 1 equal to 0. We do the cross multiplication with 3. 3 into 2, 6x. 6x plus 4 is 10x. Plus 3y minus 5y is minus 2y. 6 minus 4 is 2. So that's 6. Okay. 3 into 2, 6 minus 4 is 2z.
minus 27 and minus 1 is minus 28 equal to 0. You can take 2 common. Is this the option? Okay, 28 form only they have given option. 10x minus 2y plus 2z. Option A. Option A is your answer. So here I am. Minus I plus 2y. Question number 24. How we are going to solve this? We can write it in this form. Z minus I equal to square. Okay, this is a standard equation. It represents perpendicular bisector. You need to remember it. It represents perpendicular bisector of 0, 1. 0, 1 and 1 and 0, minus 2, like this. So imaginary part of z is also equal to minus 1 by 2. It will divide, that is minus. Imaginary part of z is equal to y. So they are asking, they are given that mod z is equal to 5 by 2. Mod z equal to 5 by 2. This implies x square plus y square equal to 25 by 4, right? And here we can say that x square equal to 25 by 4 minus of 1 by 4. That is equal to this here. X square is 6. Therefore, they are asking about mod of z plus 3 iota. That means mod of x plus iota y plus this they are asking. And so which can be written as ये वैल्यू आपको पूछा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6 है एंड वाई का वैल्यू -1/2 + 3 तो -1/2 + 3 का होल स्क्वायर ये करना है कितना हो रहा है 6 - 1 5/2 का स्क्वायर इज 25/4 इज इक्वल टू 24 + 25 49/4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 7/2 तो 7/2 ऑप्शन का है ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ बच्चों
Let H be the hyperbola whose foci are this, and the centricity is root 2. Length of its lattice rectum you have to find. Foci they have given, centricity given, length of hyperbola. What is the formula for lattice rectum? तो फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में होना चाहिए. Foci they have given 1 plus minus root 2 comma 0. ओके, ये हमारा फोकाई है. तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2a होता है. 2a that is equal to ऐड करेंगे अगर 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 क्या आ जाएगा? फोकाई hyperbola of foci are this and eccentricity is 0. लेंस के लिए तुम्हें लेंस की बात है. लेंस का 2ae 2a इक्वल टू 2 रूट 2. अगर तुम डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस. गलती किया है. अच्छा 1 प्लस माइनस 2 रूट 2. दिस implies AE इक्वल टू रूट 2. AE अगर रूट 2 है, ऑल्सो हमें दिया हुआ है E का वैल्यू भी रूट 2. Therefore A will be equal to 1 then. Okay. For hyperbola, what is the equation to find eccentricity or second axis, minor axis? B square equal to A square in bracket E square minus 1. Square in the square minus 1. So that will be equal to 1 square is 1, A square root 2 square is 2 minus 1, that is 1 into 1 to 1 only. So length of lattice sectum. What is the formula for length of lattice sectum now? Length of lattice sectum is equal to 2b square by A. That means 2 into 1 by 1. That is 2. So option number D. If the length of the minor axis of an ellipse is equal to 1/4 of the distance between the foci. Question number 26. Length of the minor axis of an ellipse is equal to. Taking the standard ellipse, 2b is the length of minor axis, which is equal to 1/4 distance between the foci, that is 2ae. This implies b equal to ae by 4.
Then we can also say that b square equal to a square e square by 16. Okay, the centricity of the ellipse here. Formula, what is the formula? Therefore, b square equal to a square in bracket 1 minus e square. So b square value you can put a square e square upon 16 equal to a square in bracket 1 minus e square. Cut this a square with this a square. What you are going to get? E square will be equal to, do the cross multiplication, 16 minus 16 e square. So it will become 17 e square equal to 16. This implies e square equal to 16 upon 17, which implies e equal to 4 upon root 17. Option number B. You can tick option B, students. Okay. Moving to next question number 27. The equation of the directrix of the parabola they are asking. Okay. Equation what they have given, y square plus 4y plus 4x plus 2 equal to 0. I will try to bring it into standard form by completing the square method. Y square plus 2 into 2y plus 2 square minus 2 square plus 4x plus 2 equal to 0. It can be written as y plus 2 whole square plus 4x minus 2 equal to 0. Okay. Y plus 2 whole square can be written as minus 4x plus 2. If I take common minus 4, I am going to get in bracket x plus 2 by 4, that is 1 by 2, like this. So, comparing it with, compare with y square equal to minus 4x, a equal to 1, capital X is equal to, oh, I've taken minus common now, x minus 1 by 2 and y equal to y plus 2. Okay. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? Directrix is like this form. X is equal to 3. X value is x minus 1 by 2 equal to 1. This implies x is equal to 3 by 2. Option number C. Moving to next question number 28, student. If the lines this and this lie along the diameters of a circle of circumference defined in the equation of the circle. Since they have given the two equations of the diameter, we need to solve it and find out the center. So it is 2x plus 3y plus 1 equal to 0 and 3x minus y minus 4 equal to 0. Multiply this equation by 3. It becomes 9x minus 3y minus 12 equal to 0. These two will cancel out. 2x plus 9x will be 11x minus 11 equal to 0, x equal to 1. Putting this value of x in the above equation, you will be getting 3 minus y minus 4 equal to 0. This implies I equal to minus 1.
So this is my center. Center is 1 comma minus 1. I got the center. What we need to find? Equation. So you need to find out the radius. Circumference they have given. Circumference, it is 2 pi r equal to 10 pi. Pi gets cancelled. 2r equal to 10, so r equal to 5. I need to check out of these four options which is going to give me center as 1 minus 1, radius as 5. Radius, I think everyone will be giving 5 only. Yes. So we need to check the center only. 1 minus 1. 1 minus 1. I think first option will give you 1 minus. Yes, it's option A only. Option A has center at 1 minus 1. 29. The line this is a tangent to a circle at point this and the center of the circle lies on this. Radius of the circle will be what? Yes. How we can solve it? They have given, see question number 29. You see, they have given some circle like this. There is a tangent drawn to it. There will be center to it. 2 comma 5. This point also they have given 2 comma 5 lies on this and center of the circle lies in x minus 2y 4. Some another line like this it is passing and this is the normal 90 degree. And then we need to simultaneously solve it. Okay. Tangent equation they have given, right? It is 2x minus y plus 1 equal to 0. 2x minus y plus 1 equal to 0. What is the slope for this? Slope of tangent minus a by b. That is m I can take as minus 2 by minus 1, that is 2. Slope of normal will be what? To it m equal to minus 1 by 2. Equation of normal implies y minus 5 equal to slope, that is minus 1 by 2 into x minus 2 like this. So 2y minus 10 equal to minus x plus 2. Then we can write x plus 2y minus 12 equal to 0. This is the equation of normal. Now solving this and the diameter, because this normal passes through the center of the circle. Now x plus 2y minus 12 is there and x minus 2y equal to 4 is the equation of equation of the line passing through the center x minus 2y plus 4. Also 1 x minus 2y minus 4 equal to 0. Adding both of these two gets cancelled out. X plus x is equal to 2x minus 12 minus 4 minus 16. So I can write x is equal to 8. I got x value as 8. Putting this value in the above equation, therefore I am getting y 8 minus 2y minus 4 equal to 0. So it is 2y equal to 4. This implies y equal to 2. Therefore, x comma y 8 comma 2. This is the center of the circle. They are asking us about the radius. Okay.
I got the center now. Therefore, radius will be the distance formula. Radius is equal to under root of x2 minus x1. That is 8 minus 2 whole square plus 2 minus 5 whole square. Under root 6 square plus minus 3 whole square. That is under root 36 plus 9. Under root 45. That is 3 root 5. So option number A is our answer. Option A. Next. So number 30. What is there? Let the range of fx be 6 plus 16 cos x into cos of pi by 3 minus x into cos of pi by 3 plus x into sin 3x into cos 6x. Okay. Distance of the point alpha beta from the line is, first you need to find out the range. What could be the range for this function? Okay. 6 plus 16 cos x into cos pi by 3 minus into sin 3. All are in multiplication only. Question number 30 is f of x they have given as 6 plus 16 cos x into cos pi by 3 minus x into cos pi by 3 plus x into sin 3x into cos 6x. Okay, so it can be written as 16 cos x. There is a satta to it, right? This cos 60 minus x cos 60 plus x into cos x. What satta we can apply? 1/4 of cos 3x is the satta. Cos 3x like this. Okay. Cos 3x into sin 3x into cos 6x. Okay. This 4 will get cancelled out. And you are going to get 6 plus 4 cos 3x sin 3x is there. Sin 3x and then cos 6x is again there. Okay, we can apply the formula again like this. 2 into cos 3x into sin 3x and 1 2 can be taken outside. Cos 6x will be left as it is. It again forms a formula sin 6x. 2 into sin 6x into cos 6x. So it will be again forming a formula of sine of 12x like this. So this is the function, my simplified form. What can be the range for this? Since sine 12x can give you either -1 or +1, therefore I can say that range of f of x will be equal to 6 plus minus 1. That is 6 minus 1 comma 6 plus 1. These two values are possible. That is 5 comma 7. Right. Six minus four. Have I made some mistake? Cos 3x, 4 cos 3x, 4 plus is there, not plus. Simplified it.
Now I need to find out the distance of this point from some given straight line. Distance formula, perpendicular distance formula, what is that? Distance formula given by that point you need to put in the equation, that is 5 into 3 plus 7 into 4 plus 12 upon under root 3 square plus 4 square whole mod. Solve it, how much you are getting? 15, 28, 12 और नीचे 5. So how much it will be? 28 और 12 कितने हो गए? 40 और 15 55 upon 5 whole mod. With 5 if you look at, you are going to get 11. Okay. So option D is our correct answer, 11. Okay. Moving to next question, 31. A straight line through the point 2 intersects the lines this and this. Okay, a straight line through the point this intersects the line this and this at points A and P. Equation of the line AB so that OAB is in equilateral triangle is what? The lines are y root 3x plus y equal to 0 implies y equal to minus root 3x. And root 3x. They are passing through origin, making an angle of 60 degree. Yes, root 3x means they will be making an angle of 60 degrees. If we try to draw these diagrams, these two lines will be like this. One is like this, root 3x, this one will be this, another one is like this. These are the two lines given. And there is one line which is passing through 2 comma 2, they are saying. 2 comma 2. Where is 2 comma 2? Somewhere to be like this. Just to find equation of the line AB. AB so that OAB is an equilateral triangle. OAB is an equilateral triangle. Third line has to perpendicular. Equation of the line AB so that triangle OAB is an equilateral triangle. There are two possibilities. Equilateral triangle बनने के लिए अगर ये 60 डिग्री होगा और ऐसे होगा ये भी 60 हो सकता है
ऐसा तो ट्रायंगल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ये होगा। मान लो इधर में कहीं तो भी पॉइंट टू कॉमा टू रहा होगा, टू जिससे वो लाइन पास हो रहा है, उससे लाइन पास हो रहा है, तो इसकी वजह से बनाने के लिए पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, टू से पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट अगर टू कॉमा टू है तो एक्स भी टू है, वाई भी टू है, टू से पास हो रहा है ना, तो ये वाई इक्वल टू टू होना चाहिए ना, वाई इक्वल टू टू, दिस इम्प्लाइज वाई माइनस टू, ऑप्शन में वाई माइनस टू। ऑप्शन बी टिक करो बच्चों। ठीक, ठीक है, ये है 32। नेक्स्ट, if the straight line to s minus 3 plus 17 equal to the perpendicular to the line passing through the point this and this, then do type. तो परपेंडिकुलर का स्लोप का रिलेशन होता है ना, m1 into m2 equal to -1, स्लोप ऑफ दिस इसका निकाल लो, स्लोप ऑफ 2x minus 3y plus 17 equal to 0 due to the line passing through the point, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 equal to -2 upon -3 that is 2/3 and m2 is equal to beta minus 17 upon 15 minus 7, that is beta minus 17 upon 8. Now perpendicular ना, perpendicular कंडीशन क्या रहता है स्लोप का, बोलो बच्चों, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस, मैं दोनों को अप्लाई कर देता हूँ, 2/3 इंटू बीटा माइनस 17 अपॉन 8 इक्वल टू -1। तो इस 2 से 8 को 4 कर लो, बीटा माइनस 17 इक्वल टू -12 हो गया, तो बीटा इक्वल टू 5, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इज द आंसर। 33, इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस लाइज ऑन व्हाट, अच्छा इस पे लाई करेगा इमेज, तो लाई करने के लिए पहले इमेज निकालना पड़ेगा, फिर पुट करके देखना पड़ेगा। इमेज निकालने का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 33, इमेज ऑफ अ पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a, x1 का पॉइंट मतलब 3, कोएफिशिएंट x का 1 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन a, दैट इज -1 इक्वल टू -2 इंटू ax1 दैट इज 3 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -1। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन -1 इक्वल टू -1 इंटू -2 is 2, 1 into 2, 2 से 1 आ गया, तो x will be equal to 4 and y will be equal to 4 है, -1 plus 5 4 only, दोनों भी सेम सेम आ गए। चेक चेक therefore point image is equal to 4। अब ये पॉइंट है ना, मुझे पुट करना है क्वेश्चन, चेक करना किसको सेटिस्फाई करना। 4 माइनस टू, टू का फर्स्ट ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, 4 माइनस टू, टू का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस टू, टू का स्क्वायर 4 प्लस 4 तो 8 होता है, पहला गलत हो गया। फिर से 4 माइनस टू 4, 4 माइनस 4 0, 4, सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हो गया ऑप्शन बी। 34, let the orthocenter and centroid of a triangle be a b respectively if c is the circumcenter of this triangle, orthocenter and centroid of a triangle
रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट AC एज डायमीटर विल बी व्हाट। चलिए क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट गिवन है। सेंट्रॉइड मतलब G से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम इसको, B 3,3। ठीक है। ऑर्थो सेंटर H given by -3,5। सर्कम सेंटर 2:1। सर्कम सेंटर हमें पता है, सर्कम सेंटर जो होता है ना, सर्कम सेंटर C x, y divides in the ratio of 2:1, that is HG GC। ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है, फिर सेंट्रॉइड है C। सर्कम सेंटर बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो HG is to GC इक्वल टू 2:1। तो सेक्शन फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं ना हम। ठीक है, तो बताओ। यहाँ पे H दे दो, यहाँ पे G दे दो, यहाँ पे C दे दो। C का कोऑर्डिनेट हमने नहीं दिया है, G का है और H का भी है, -3,5। ये 2:1 है। सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो 2x, देखो यहाँ पे बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला 2x -3/3 इक्वल टू 3। तो 2x -3 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। Similarly, that belongs to 2y plus 5 upon 3 equal to 3. This implies 2y plus 5 equal to 9. So 2y equal to 4, y equal to 2. तो हमें c equal to 6,2। देखो फाइनली क्या पूछा है, सी तो निकल गया। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द लाइन सेगमेंट AC एज डायमीटर। तो AC के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के उसका हाफ कर दो। Therefore diameter AC is equal to अंडर रूट ए, मतलब हमारा ए किसको लिया हम लोगों ने, ऑर्थो सेंटर को ए बताया ना उसमें, ए और अपना सी का वैल्यू 6 -3 यानी कि 6 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -5 का होल स्क्वायर। देखो तो कितना, 9 का स्क्वायर 81, 9 रूट 90, 1895। इसको मैं लिख सकता हूँ 3√10। तो ये तो हो गया हमारा डायमीटर। रेडियस पूछा है ना हमसे, रेडियस इज इक्वल टू डाया बाई 2, that is 3√10/2। So if you want to simplify it, you can write it like this:
root 5 root 2 by 2, that is 3 in bracket 5 by 2. So we will be getting option D as well. Question number 35. The lowest integer which is greater than this is the lowest integer which is greater than this one. इसको हमें लिमिट के थ्रू करना पड़ेगा. आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n whole raised to power n अगर होता है, so this is almost equal to e and exactly equal to e, and its value, e is 2.718 something, which is obviously less than 3, right? According to, in my question, what they have given, as per question, 1 plus 1 by 10 raised to power 100, and this is also 10 raised to power some 100 is there, right? Matching, almost same pattern. 10 raised to power 100 is almost equal to here. 10 raised to power 100 is almost equal to infinity only, right? So we can say that this sequence is strictly increasing type, strictly increasing, and bounded by e less than 3. Cannot go more than 3 even. The lowest integer strictly greater than this value is 3. So we can say the lowest integer strictly greater than this value is true. Next, option 3 you can click it. Okay. Question number 36 now. They have given some matrices value A inverse of given alpha given, then what is the value of alpha? So you need to find the value of alpha beta lambda overall. क्या मैट्रिक्स गिवन है? 1 lambda 5 10, like this they have given. इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? इक्वेशन इज गिवन बाय a square minus trace of a into a plus determinant value of a into identity equal to 0. ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, 11 टाइम्स ऑफ a प्लस इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 10 minus 5 lambda times of identity equal to 0. ओके, और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? ऑल्सो a इनवर्स जो होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट a होता है ना, वही फॉर्मूला होता है. तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें,
multiplying by A inverse to both sides. क्या हो जाएगा ये A माइनस multiplying by A inverse to both sides. A minus 11 आइडेंटिटी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 5 लैम्डा ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं ए इनवर्स का वैल्यू निकालता हूँ तो आपको क्या मिलेगा 11 इंटू आइडेंटिटी माइनस ए डिवाइडिंग इट बाई 10 माइनस 5 लैम्डा लाइक दिस। ओके ओके। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेते हैं सपोज तो 11 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस ओके आइडेंटिटी को बाद में रखता है ए को रखो ए को रखना है तो क्या रखेंगे अपन माइनस 11 नहीं आएगा ना फिर -1 अपॉन ए प्लस 11 अपॉन 10 माइनस 5 लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय कंपेयरिंग विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ therefore alpha equal to -1 upon 10 minus 5 lambda and beta equal to 11 upon 10 minus 5 lambda like this। okay अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से उन्होंने ये भी दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 है ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ऊपर में -1 प्लस 10 इक्वल टू -2 10 by -2 10 2 से 10 कट हो गया 5 so you will be getting -5 equal to 10 minus 5 lambda। 5 lambda equal to 15 so lambda equal to 3। अब ये lambda का वैल्यू पुट करके यूजिंग दिस lambda value we get alpha is equal to 1 by 5 and beta equal to -11 by 5। so now 4 alpha square plus beta square plus lambda square is equal to 4 into 1 by 25 plus 1 to 1 by 25 plus 9। तो इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा 4 plus 121 plus 9 into 25 is 225 upon 25। तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एक 5 और 10 एक 2 2 4 और एक 5 3 सही है 5 4 10 एक
अरे 5/25, 25 से कितने बार में कट हो जाएगा? 25, एक 25, 25 चौके का यू गॉट 14। ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए is correct answer. Moving to question number 37, students. The vectors ABC are of the same length and taken pairwise. They form equal angles. They form equal angles. Okay. If A is this, B is this, then what can C be equal to? Yes, equal angles. They are saying that A vector equal to I plus J, B vector equal to J plus K, magnitude of A equal to root 2, magnitude of B magnitude. Also, magnitude of C equal to root 2. They are saying that angle between same taken pair they form equal angles. Pairwise equal angle बने. Equal angle का मतलब तो मैग्नीट्यूड ए डॉट बी अगर किया जाएगा तो also a vector dot b vector equal to 1. ओके, तो a डॉट b अगर 1 ले रहा तो मैग्नीट्यूड भी तो 1 1, मैग्नीट्यूड भी अपने को रूट टू दे रखा है. रूट टू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1. अच्छा, तो 1 है अपने पास, है ना, क्योंकि उनका एंगल सेम दे रखा है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ए डॉट बी जो भी थीटा है ए डॉट बी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट टू का टू हो गया. और थीटा तीनों का सेम होना, तीनों का सेम होने के लिए एक ही केस बनता है. नहीं, ऐसे थोड़ी बोला ट्रायंगल बन रहा है. ये कौन इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, एंगल्स बना रहे हैं सेम लेंथ टेकन पेयर वाइज, दो दो का ग्रुप बना रहे हैं. तो ए डॉट बी इक्वल टू जब हम करेंगे तो इंटू कॉस थीटा भी आता है. ए डॉट बी भी 1 है और बी डॉट सी ये भी 1 हो जाएगा और सी डॉट ए ये भी 1 होगा. ऐसा सब है. चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा. तो अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा तो मेरे पास जो सी वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में -i+4j -k/3 दिया है ना ऑप्शन में. चेक ऑप्शन ए.
ये चेक कर रहा हूँ मैं ए। सी वेक्टर के बारे में उन्होंने बोला है कि ले लो आई प्लस के ऐसा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड सी रूट टू होना चाहिए, हो रहा है, यस। और इसका डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। आई प्लस की है ना, हाँ। और इसका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? ए डॉट सी अगर मैं निकालूंगा तो आई जे के साथ आई ने वन ही आ रहा है, तो मैच तो हो रहा है, वन भी आ रहा है, रूट टू भी आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया अपना। चेक बी। चेक बी का वैल्यू क्या गिवन है? सी वेक्टर एज माइनस आई प्लस 4j माइनस के अपॉन 3। निकालो जरा ए डॉट सी क्या आ रहा है। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना आ रहा है? 116 1 अपॉन 9, ऐसा। 18/9 रूट टू तो आ रहा है। उसके बाद अब हमें ए डॉट सी चेक करना पड़ेगा क्या आ रहा है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर मैं चेक करूंगा तो क्या आएगा? ए इज आई डॉट जे है ना, आई प्लस जे। -1 होगा और यहाँ से +4 होगा। ए डॉट सी 3 आ रहा है, अपॉन में 3 भी है ना, तो टर्म ही नहीं है, तो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। ओके। एंड बी डॉट सी क्या आ रहा है जरा देखो। बी का वैल्यू भी आई का टर्म नहीं, उसके बाद जे और के है, तो जे के साथ 4 बनाएगा, जे और के है ना, हाँ, के साथ -1 बनाएगा। -1/3 डेट इज 3/3 और ये 1 आ रहा है। मतलब बी डॉट सी डॉट सी भी आ रहे हैं, नहीं दोनों भी ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं हमारे, है ना। Therefore, both A and B are satisfying. Both A and B are true. Therefore, you have to take option number D. Going to 38th number question. For what value of the angle between the vectors A and B is the quantity this mass? 38. They have given A vector cross B vector magnitude plus √3 magnitude of A vector dot B vector. So when I will solve it, I will be getting AB sine theta plus √3 AB cos theta. If I take AB common in bracket, I am going to get sine theta plus √3 cos theta. When I will be solving it, I will be taking 2 outside in bracket. It will be 1/2 sine theta plus √3/2 cos theta. So I can write it like this. Sine of 1/2 means 30. So it will be theta plus 30. So 3/2 sine A cos B if I'm writing it. 60 na? Pi by 6. 60 means pi by 3. Okay. Maximum 1. So for maximum theta plus pi by 3 must be equal to 90. Pi by 2. So theta should be equal to pi by 6. That is equal to 30 degree. So option A. Next, 39. A vector and B vector B. If A vector cross B vector plus C vector continues, then what is the value of alpha plus beta plus gamma? Okay.
cross B cross A. If I will try to solve it, it will be A dot A of B vector minus A dot B of A. तो ये डॉट प्रोडक्ट तो ठीक है, A vector into B. मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू गिवन है ना अपने को, क्या गिवन है A का वैल्यू? गिवन A वेक्टर इक्वल टू I माइनस J प्लस K. So magnitude of A vector equal to root 3. B vector equal to I plus 2J minus K. Magnitude of B vector is root 6. So A dot A, A dot B. A dot B vector will be equal to 1 minus 2 minus 1. That is minus 2. So therefore, therefore A vector cross B vector cross A vector is equal to का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ऐसा है 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज आई प्लस 2j माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स आई माइनस जे प्लस के, 4 to the equal 3 plus 2 5 and 6 minus 2 4 जो minus 3 plus 2 is minus 3, like this. So therefore, alpha plus beta that is equal to alpha I plus beta j plus gamma k, like this. So alpha plus beta plus gamma is 5 minus 4 minus 1, which is equal to gamma minus 1 प्लस 4 होगा कैसे, एक मिनट, 3 into the 6 minus 6 minus 2 plus 4 होगा ना यहाँ पे, प्लस 4 5 plus 4 9 minus 1 8, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी. Question 40. What is the length of the projection of the vector this on the vector this? Okay, length of projection. That means scalar projection they are asked. Scalar projection formula is A vector projection of A vector on B vector is given by A vector dot B vector upon magnitude of. Okay. So that is equal to I plus 2j plus 3j dot 2I plus 3j minus 2k upon magnitude of B vector is 2I plus 3j plus 2k. So we are going to get 2 plus 6 minus 6 upon mod of this is under root 4 plus 9 plus 4. This 2 will get cancelled out. 2 upon 17. So option C. Option C is your answer. So 41. If two random variables x and y connected by the relation days,
X follows a binomial distribution with around then what is the variance of Y? Okay. Question number 41. They have given 2x minus 3y upon 5x plus 4y equal to 4. If we do the cross multiplication, we are going to get 4 in bracket 5x plus 4y. So it will be equal to 4 into 5, that is 20x plus 16y. Follows a binomial distribution. What is the variance? X, you need to find a value. Okay, x को one side करो. 2x minus 20x will be minus 18x equal to 16 plus 3 as 19y, है ना. तो ये एक रिलेशन है. हम लोग अभी x का वैल्यू निकालते हैं पहले. वेरिएंस ऑफ x का वैसे फॉर्मूला होता है NPQ. n का वैल्यू है 10, p का वैल्यू 1/2, q भी 1/2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 5/2. चलो नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ y अगर मुझे निकालना है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू -18/19. ऐसा ये जो रिलेशन आया इसको यूज कर लो. तो वेरिएंस ऑफ y विल बी इक्वल टू -18/19 का होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x. ये रिलेशन काम करता है, ठीक है. वेरिएंस स्क्वायर में वेरी करता है ना, इसलिए. तो 18 का स्क्वायर अपॉन 19 का स्क्वायर कितना होगा, 324 अपॉन 19 का स्क्वायर 361 एंड वेरिएंस ऑफ 5/2. कट करो 2 से, हम चेक 12 2 में 4 मल्टीप्लाई कर दोगे 5 दिन 10 चेक 30 और 31 5 और 8 और 36. ऑप्शन ए 42. Let x this be two lines of relation computed function by value beta. Theta is the acute angle between them. What is the value? दोनों का स्लोप निकालो पहले तो. x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2. दूसरा लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2/3. tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 -1/2 माइनस माइनस प्लस 2/3 1 प्लस, दोनों का माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ही होगा ये नॉट. ये 2 से 2 कट हुआ, -3 एंड +4, यानी कि 1/6 अपॉन 1 प्लस 1/3 4/3. 3 से 2 कट हो जाएगा, 1/8 निकल के आया, ठीक है. तो ये तो मेरे को मिल गया tan थीटा का वैल्यू. अपने को पूछा क्या है, अपने को tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए. tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा. ये वैल्यू पुट करो तो 3 इंटू 1/8 माइनस 1/8 होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/8 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करके दिखाना है कितना आ रहा है. तो 3/8 माइनस 1/8 क्यूब मतलब
9 512 होगा ये, ठीक है। और नीचे 1 माइनस 3/64 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इसको। 512 लाने के लिए 8 का क्यूब किया गया है ना। डिफरेंस ऑफ 8 64 64 इंटू 10 64 इंटू 3 64 इंटू 3 3 चौका 12 3 चौका 12 92 माइनस 1 upon 512 dividing it by minus 361 by 64. So you are going to get 191 upon 512 into 64 upon 61. 512 ये 8 8 times में कट हो गया तो 191 that is equal to 191 upon 8 8 से काट 488. So therefore I can say that 488 into tan 3 theta is equal to 191. So option number D. You can tick option number D. Question number 43. If R is the coefficient of correlation between X and Y, then what is the correlation coefficient between this and this? Okay. Let मान लेते हैं let U is equal to 3x plus 4, a scale factor of plus 3, and V is equal to minus 3y plus 3. The scale factor is of minus 3. Okay. Since the scale factors have opposite signs, the scale factors have opposite signs, therefore correlation coefficient of UV will be equal to minus of xy. Opposite sign is to negative. थ्री का कोई opposite sign, so it will be minus r. Minus r, that is option D, you can tick. Okay. Next, 44 we can do. Three perfect dice are rolled under the condition that no two show the same face. Okay. What is the probability that one of the faces shown is an S? Probability that one of the shown is an S. Sample space of no two faces same when
3 dice are drawn. 6, 5, 4, 20. Okay. And event required event is one of the places should be is. One of the places should be one. Should be one. One of the places should be one. Just two distinct places from the root. And distinct places. ये केस हो सकते हैं उसमें. एक को अगर तुमने एस फिक्स किया, सपोज तुमने 1 फिक्स कर दिया, तो बाकी का 1 छोड़ के कितना आ सकता है? 5 आ सकता है यहाँ पे. Under the condition that no two show the same face. Okay. Same face. 5 into 4. और ये 3 केस हो सकते हैं इसके into 3. It can be arranged into 3 possible ways. Five into 4 into this part. Here is probability. 60 by 1. That is 1 by 6. So, okay. Occurrence of a disease in an industry. Question number 45, you can see. Since that there are 20% chances of suffering from it. What is the multi data out of 6 over 4 at random? 4 or more will. So, 20% from it. Probability of suffering is 20%. मतलब 1 by 5. 20%, that is 1 by 5. Not suffering will be 4 by 5. Okay. Whatever out of the 6 workers chosen at random, n equal to 6, 4 or more will suffer from the disease. That means we have to find n equal to 6. We have to find x greater than or equal to 4. Will be suffering from the p of x equal to 4 plus p of x equal to 5 plus p of x equal to 6. And that is equal to 4 means 4, 6 to 4, 1 by 5 raised to power 4 plus 65, 1 by 5 power 5, 4 by 5, 1 plus 6 is 6, 1 by 5 power 6, 4 by 5 power 0. Now solve it. 64 is
15 into square 16 upon 5 raised to power 6 plus 65 is 6 into 4 by 5 raised to power 6 plus 1 upon 5 raised to power 6 like this. 15 into 16 225 और 15 2 40 होगा ना. Okay, plus 24 plus 1 upon 5 raised to power 6. So that is equal to 242 50 60 65 265 upon 5 raised to power 6. 5 raised to power 6 will be 15625. When you will try to cut it, you will be getting 53 upon 3125, which is option B. Okay, done. Moving to question number 46. On A contains 2 white, 2 black ball, while on B contains 3 white, 2 black. So one ball starts with one to one B, and then a ball is on out of one B. Is white. There are two arms, on A and on B. This is A, this is B. On A has 2 white, 2 black. On B has 3 white, 2 black. One ball is transferred from like one B. Probability of white ball from urn A is equal to 2 by 4, that is 1 by 3. Probability of black ball from urn A is 2 by 2, that is 1. If white ball is transferred, case 1. If I transfer white ball, then B will have B will 4 white and 2 black balls. So probability of white ball when white ball is transferred from urn A will be equal to 4 by 6, that is 2 by 3. Case 2. If black ball is transferred, then we will have 3 white and 3 black balls. Then probability of white ball when black ball is transformed forward from urn A is equal to 3 by 6, that is 1 by 2. Now, probability of white ball. That is will be equal to original white ball 1 by 2 into 2 by 3 7 by 12.
यू कैन टिक ऑप्शन नंबर ए. You can see question number 47 students. What they are asking: a fair coin toss till two heads occur in succession. What is the probability that the number of tosses required is less than 6? Okay. हमारा क्वेश्चन है sequences ending with first occurrence of two times head-head. Occurrence of head-head in less than 6 tosses. How much? एक हो सकता है हेड हेड, ये वाला केस. इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4. अगर मैंने टेल हेड हेड लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8 टोटल 3 के लिए. अगर मैंने ऐसा लिया, फिर उसके बाद हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल और हेड हेड. It will be equal to 2/16. That is equal to 1/8 only. नेक्स्ट अगर मैंने 5 का लिया, तो उसमें हो सकता है टेल हेड हेड, या फिर हो सकता है टेल, सॉरी, ये भी ध्यान रखना है हमें, सिर्फ लास्ट में ही 2 हेड चाहिए ऐसा होगा. उसके बाद टेल 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 और हेड हेड, ये भी हो सकता है. फिर हेड टेल टेल, फिर से हेड हेड, रुक जाना. तो ये हो गया 3/32. सबको ऐड कर लो. देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी will be equal to 1/4 plus 1/8 plus 1/8 plus 3/32. सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? थोड़ा और आसान कर लेते हैं. 1/4, 1/8, 1/8, 1/4 ही होगा, प्लस 3/32, यानी ये 1/2 हो गया. 1/2 प्लस 3/32, 16 प्लस 3, that is 19/32. ऑप्शन ए. Four-digit numbers are found by using this 1, 2, 3, 4 without repetition. How many more divisible by 4? Question number 48. Four-digit numbers. Okay. Using digits 1, 2, 3, 5 without repetition. How many divisible? Divisible by 4 होने के लिए लास्ट के 4 नंबर शुड बी divisible by 2. तो कितने पेयर्स ऐसे हो सकते हैं? 1, 2 लिखा जा सकता है. 1, 2 के अलावा मैं यहाँ पे 32 लिख सकता हूँ. और बोलो. 1, 2, 3, 4. और उसके बाद ट्रेडिशन इज अलाउड. उससे बिल्कुल होने को तो 5 तो नहीं चाहिए, 2 ही रहना पड़ेगा. ठीक है. आई थिंक यही दो पॉसिबिलिटीज हैं बस. और कौन कौन सा पेयर हम बना सकते हैं? 1, 2, 3, 2, और इसके अलावा 5, 2 भी एक बनाया जा सकता है. तो 5, 2, यस. ये 3 बन रहे हैं. बाकी इधर 2 डिजिट है अपना, 2 तरीके से वो अरेंज हो जाएंगे. ये तो वेज है ना पूरे. 1, 2 फिक्स है, 32, 32 फिक्स है. बचा क्या? 2 डिजिट बचा है, तो 2 × 1 यहाँ पे आ जाएगा. 2 × 1, यहाँ पे भी 2 × 1, यहाँ पे भी 2 × 1. तो ये कितना हो गया? 2, ये भी 2, ये भी 2. ऐड कर लिया तो 6. और टोटल कितने बन सकते हैं? डिविजिबल बाई 4.
सीधे टोटल पूछा है ना, तो टोटल 6 ऑप्शन डी हो गया हमारा डायरेक्ट। M parallel curtain giving rise to 60 parallel vertical. Okay. Question number 49 is there is a formula पैरेललोग्राम्स के लिए होता है m पैरेलल लाइंस में से 2 लाइन ले लो और n में से भी 2 लाइन ले लो। ये टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमें 60 दे दिया। m प्लस n का वैल्यू बताना है। सॉल्व करो MC2 60 आना चाहिए। MC2 m into m minus 1 by 2 into n into n minus 1 by 2 equal to 60। n into n minus 1 equal to 60 into 4, that is equal to 60 का फैक्टर क्या होता है 15 चौके 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 के लिए 2 इंटू 2। हमें इसको 4 फैक्टर्स में लाना है जिसमें दो दो कंजिक्यूटिव बना सके हम। जैसे 2 इंटू 3 6 और 5 का कंजिक्यूटिव बन रहा है और 4 और 2 का कंजिक्यूटिव नहीं बन पा रहा। 6 और 5 6 5 4 2 ऐसा हो रहा है। 12 बजे 60 और 4 क्या हो सकता है मन का वैल्यू, फिर और सोचो। पाँच पढ़ाई 5 4 8 8 7 9 बीच लगातार 4 कंजिक्यूटिव दो कंजिक्यूटिव करना आपको तो 6 और 5 में 8 8 नहीं 6 6 और 5 2 इंटू 1 करना 5 में 10। तो कुछ हो सकता है ना 4 और 2 5 और 4 5 इंटू 4 इंटू 12 ऐसे कर। Therefore, m is equal to 5 ले लो and n equal to 4 ले लो। n plus n पूछा ना। Therefore, m plus n equal to 5 plus 4 that is 9 option C। That's all will be for now. We will be continuing it if we get time afterwards. ठीक है, till 49 we have completed. This process will be done after some time. There is a break now.